नमस्ते। आज मैं ये वीडियो उस वीडियो के रिस्पॉन्स में बना रही हूँ जो साईं बाबा के बारे में बहुत ही अभद्र और बहुत ही बुरे शब्दों के बारे में बात की है एंड बोला है कि कैसे वो एक मुसलमान चांद मियाँ था जिसने हिंदुओं को बहला फुसला के उनको उनका बेवकूफ़ बना के उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश में मुसलमानों को भी अपना भक्त बनाया और हिंदुओं को भी अपना भक्त बनाया। और था वो एक वैश्या का पुत्र और उसका जो फादर था वो एक बारबेरिक इस्लामिक अफ़गानी था। ऐसे ऐसे करके उनकी हिस्ट्री के बारे में ये बताया। मेरा रिस्पॉन्स उस वीडियो को ये है, साईं बाबा किसी के पास नहीं जाते और कहते कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजा जाए। उन्होंने अपने हर भक्त को ये शिक्षा दी है कि मैं अल्लाह का सेवक हूँ, मतलब अल्लाह मालिक है, कि देयर इज़ वन गॉड। आप किसी को भी विश्वास करो, सब भगवान एक ही हैं। और वही चीज़ हमारा हिंदू धर्म भी, कि सारे भगवान एक हैं। दूसरा, साईं बाबा कहीं जगह जगह अपने धर्म का या अपने व्यवहार का या अपने कल्ट का प्रचार करने कहीं नहीं गए। वो एक 16 साल के पहले 8 साल की व्यवस्था में वो आए थे और नीम के वृक्ष के पास उनको कड़ी तपस्या करते हुए देखा था। और फिर जब गांव वाले इकट्ठे हुए तब वो फिर अपनी तपस्या में और जाने के लिए वो थोड़ा लीन हो गए अपनी तपस्या में। फिर जब वो वापस प्रकट हुए तो वो एक बारात के साथ आए और वो 16 साल के तब एक बाल युवक थे। तब भी वो इतनी अपनी तपस्या में जंगल में लीन होते थे कि एक माता थी जिन्होंने उनको पहचाना और उनकी सेवा में उनको रोटी देना, जंगल में ढूंढ ढूंढ के उनको वो रोटी देती थी। एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट शिक्षा of Sai Baba was नाम जप, नाम सप्ताह, आत्मज्ञान, yoga, and kirtan, satsang. These are the Hindu ways of life that Baba propagated amongst his devotees, alike Muslim, Hindus. He never discriminated. People like us, lesser mortals, full of body consciousness, who believe in religion, politics, cannot understand, because here is a section of insecure Hindus who are trying to defend Sanatan Dharma. Our Sanatan Dharma from the very beginning emphasized the need of a true guru, a Sadguru. And in Kali Yuga we have had many Sadgurus, many enlightened beings who still walk the earth with us. We just need to, actually we can't even recognize them. They will just grace us. If we are to be taken under their wings, they'll take us under their wings. So this is my response to the videos that are there out there talking about probably a false account of Sai Baba's early life, and the other historical facts have been discussed in great detail in his biography. And Baba was in Shirdi throughout his lifetime till he attained Samadhi. He never went from here and there in search of devotees or asking anybody to convert in a particular cult. There is no Sai Baba cult. Everybody practices their own religion. He has never asked his devotees to leave anything other than the six vigar, which are Kam, Krodh, Ahankar, Lobh, Hat. These are his preachings. This is all he asked his devotees to give up on. He asked his devotees to be kind, compassionate, and to practice a cruelty-free life. And for example, I will give my example. I used to eat non-veg. I never wanted to leave non-veg. I could not have imagined my life without eating non-veg. But after I read his biography, without him asking to give up on non-veg, my samskars and my vrittis, I could overcome them, and I am a vegetarian since past
14, 15 years now, 15 years, without having any desire for non-veg. So I hope this can inspire the critics to at least read more on his actual biography, which has been accounted for, and understand what that human form of divine divinity was. मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उच्च कोटि ब्राह्मण, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारा वैल्यूज़ जो थी वो सेक्युलरिज्म की थी और सनातन धर्म की थी। भगवान राम, भगवान शिव की मैंने उन्हीं को अपना आराध्य देव माना हमेशा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि भगवान को पाने से पहले आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गुरु ही आपको अपने भगवान का परिचय देते हैं। तो मेरे अनुभव में मेरे को, जब मैंने अपने स्वयं को सरेंडर कर दिया, न्योछावर कर दिया, तब मेरे ऊपर साईं की ऐसी कृपा हुई कि मैं एक जस्ट अ बिलीवर से मोर देन अ बिलीवर हो गए। यू नो, पहले तो हम सिर्फ एक कर्म करते हैं कि हाँ एक भगवान है, एक शक्ति है, अब वो मेरे हर भाव को जानते हैं, समझते हैं, मेरी हर थॉट को जानते हैं, मेरे भाग्य विधाता ईश्वर हैं। लेकिन जब से मैंने बाबा की कृपा अपनी ज़िंदगी में पाई, मैंने वो ईश्वर की कृपा महसूस करी और जाना एक विश्वास सबूत के साथ, कि अनुभूति के साथ कि ईश्वर मेरी हर थॉट, मेरे हर भाव, मेरे हर कर्म के साक्षी हैं, जानते हैं और मेरे साथ हर पल हैं। और कहाँ मैं एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली आज ज़्यादा हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बाबा की भक्ति करी या बाबा की मेरे ऊपर कृपा पड़ी, तो मैं आज एक और ज़्यादा बेटर एक हिंदू हूँ। पहले मैं हर धर्म को मानती थी, आज भी मैं हर धर्म को मानती हूँ, लेकिन मैं आज साईं की वजह से एक बेटर हिंदू अपने आप को कह सकती हूँ, एक बेटर सनातनी अपने आप को कह सकती हूँ, क्योंकि एक सद्गुरु ही हैं जो आपको अपने ईश्वर के साथ मिला सकते हैं। और उनकी शिक्षा ऐसी है कि it is so compatible with the Hindu way of life that he is not preaching, but he is leading a life by example. And unless you have read his biography, you are just living in ignorance and trashing someone who is so learned and so reverent with your ignorance, I would say. ये 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं इस वीडियो को। आई थिंक ये इसीलिए है बिकॉज दैट पर्सन वांट्स पब्लिसिटी, और आई डोंट नो व्हाट द एंड हाउ कैन सनातन धर्म, एन एंशियंट धर्म ऑफ दिस civilization, ever be threatened by a man so ordinary, a fakir who never went out preaching his values or his culture or his religion. He was just a fakir, he had no religion. How can a sannyasi have any religion? They are above religion and politics. And if you read the biography, आप इनके सच्चरित्र का अगर आप अध्ययन करें, अपनी ईगो, अपनी इग्नोरेंस को साइड में करके विद एन ओपन माइंड, you will realize that the values in the book, in the form of short stories, are so beautiful that they can change your life. That is my only response to this stupid video which has been uploaded. God knows what are the facts, if it's even factual. But even if you say 1908 में 1918 में ही passed away, and yes, भारत उस टाइम अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। अगर साईं बाबा भगवान ही थे तो भारत में इतना वो, हम लोग क्यों अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे? सी, भगवान आपकी डेस्टिनी में इन्वॉल्व नहीं होते, बट साईं बाबा हैड सेड दैट आफ्टर द 9th रूलर द कंट्री विल बी लिबरेटेड, एंड ऑल्सो it is for the civilization to endure the karmic baggage that we are carrying as a karma, right?
and we have to fight for our own freedom, and you can't expect miracles sitting. And why should you expect a miracle as a civilization? If one civilization is dominating you, be it Islamic civilization or British rule, then you as a civilization have to stand up to that. We were paying for our own sins because we were not united as Hindus, or Indian civilization wasn't united. We paid for it, and finally, when the consciousness came in our masses that we have to be united and fight for our freedom, we came together and we fought for it. That was one point. And second, this man, he died in 1918, and at that time there was no social media, there was nothing, and he was not even known. I became his follower in the year 2008 out of my own quest for answers, spiritual answers. Nobody came to me to preach about him, nobody spoke of him. I have myself become a follower, and people can question, people can say that tum murkh ho, tum ye ho, tum wo ho, but I think God has given reasonable intelligence to every human being to see what is best for them, and to say that so many followers are all fools. They can be policemen, they can be judges, they can be lawyers. Sai Baba's followers are engineers, technicians, doctors, so on, so forth, big and small, everybody. So, and Shirdi Sai never believed in having a cult. So there is no cult. So that threaten or whatever the Sanatan Dharma protectors, self-claimed protectors of Sanatan Dharma feel, I think is unfound fear that they have. There is no such thing. In fact, I would say thanks to Sai Baba, I am a better Hindu, I am a better Sanatani, I am closer to God than I ever was before, and that is the whole message of God and Sai Baba, that be good, do good, speak good, and God is embodied in each and every one of us, and we can realize God. And so don't get carried away by these malicious propagandist kind of videos which are so full of ignorance. Go read the book, understand the teachings, and try to inculcate them. Also, Baba never asked his followers to give up on non-veg. I left non-veg because after reading the book, I overcame my vrittis and my samskars, and I became a better Hindu. I left non-veg altogether. You have to give some credit to this ordinary fakir who has changed millions and millions of lives even after his death. Some 70 years after his death, he has 70 to 80 years after his death, he has changed so many lives. So grant him his due. Om Sai Ram. Namaste. Jai Hind.